इस टाइम पे इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे हालात काफी ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। बॉर्डर को क्लोज कर दिया है। कहा जा रहा है कि बॉर्डर को अब दोबारा नहीं खोला जाएगा। इंडिया ने अपनी आर्मी बॉर्डर पे डिप्लॉय कर दी है। उसके खिलाफ नेपाल ने भी अपनी आर्मी डिप्लॉय कर दी है। इंडियन आर्मी की तरफ से जो है वो डॉग स्पेशल डॉग्स जो है वो बॉर्डर पे पहुंचा दिए गए हैं ताकि कोई भी इलीगली तरीके से इंडिया से नेपाल या नेपाल से इंडिया ना जाया जाए। इंटरनेशनल मीडिया हो चाहे वो इंडियन मीडिया हो, सब यही बात करे कि नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। तो रिपोर्ट देखिए, फिर आपके साथ इसके बारे में बात करते हैं। At a time when Pakistan is sending unidentified militants to India via Nepal border, the friendship of India and Nepal is blooming as we see from the ground zero. We are present at the Indo-Nepal border and the no man's land especially. And to establish this particular part, I'll be explaining you what it is all about, because currently India and Nepal forces are doing the joint operation, the joint combing, joint patrolling out here after the news which broke out and said that a total of 30 to 35 unidentified militants from Pakistan can enter the Nepal border, and to ensure them not crossing the border, be it SSB or the armed police force of Nepal, both have come together for the joint patrolling at here. And if I may explain to you, as India and Nepal share mutual friendship, this is just the symbolic thing to ensure that at this particular point, that's India, where it's written India, Bharat, and while on this particular side, it's written Nepal. So this is Nepal, and right here is Nepal. But currently, we are standing at the no man's land, because 10 yards from here to 10 yards from there is the no man's land, and that's why both forces are doing the operation at present. As you see, Nepal and Indian forces all together have come to fight against the terrorism. I have been joined by Commandant of SSB, Ganga Singh ji. Ganga ji, please tell us about the joint operation, what you guys are doing here, and what are the planning in the wake of the news which came out that some people are trying to cross the border. Yes, as you know that some person of Pakistan nation and some are from Bangladesh. They have already crossed over to Nepal, and they may try to come into India through that open and porous border. Though for that we are with the Nepal APF and SSB, we are regularly doing joint patrolling, regular interval. We are almost alert 24/7, and we are ready to take over any challenge. Be it the narrow lanes or the farmlands, the Nepal forces or the Indian forces are checking whosoever is crossing those lanes, those roads, to ensure proper safety across Nepal border and the Indian border, and to ensure that these Nepal armed forces men and those SSB men from India are here to ensure and to damage the plans of Pakistan to enter inside India. We are at the Indo-Nepal border and present at the watchtower from where the SSB Jawans are keeping a vigil eye on the area coming towards Nepal. And if you see this particular area, you can get the sense that proper fencing has been made here at the India-Nepal border. Though they share mutual respect, mutual friendship, but this area, because it departs one headquarters from another, that's why this area is loaded with the fencing. And in that part where you can see some white pillars as well, beyond those white pillars is the area belongs to Nepal. And if any unidentified militant tries to cross this particular area, the Jawans of SSB posted at the watchtowers
will see from here, and they also have this particular INSAS and many other guns with them so that they can target any unidentified movement from that particular area. These jawans of SSB are doing their duty 24/7 round the clock from these watchtowers to ensure any movement coming from across the border to India to ensure safety for all of us. With cameraman Gaurav Gupta, Samarth Srivastava, Indo-Nepal border for India Today. तो कहा जा रहा है कि इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। जब से इंडिया पाकिस्तान के बीच में जंग हुई है तब से नेपाल के साथ ताल्लुकात नहीं बेहतर करना चाहता इंडिया चाहता है कि भाई पाकिस्तान का बदला अब हम नेपाल से लेंगे। तो कभी क्या इल्ज़ाम लगा देता है तो कभी क्या इल्ज़ाम लगा देते हैं। अभी कहा जा रहा है कि भाई पाकिस्तानी आतंकवादी नेपाल में घुसे गए हैं। तो यार ये कौन सी सिचुएशन इस टाइम आप बना रहे हो? और मैंने जो बताया था वैसे ही सिचुएशन बनी हुई है कि भाई अब नेपाल के ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगे। ये सारा इंडिया का एक बना बनाया प्लान है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बॉर्डर को बिल्कुल क्लोज कर दिया है, बॉर्डर के ऊपर आर्मी को डिप्लॉय कर दिया है। ख़ास करके दिखाया जा रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है। जो स्पेशल कुत्ते या डॉग्स होते हैं उनकी निगरानी में बॉर्डर की सिक्योरिटी को दिखाया जा रहा है कि भाई बॉर्डर पे कोई चिड़िया भी पर ना मार सके। और ये कंडीशन क्यों बनी हुई है? इंडिया पाकिस्तान की जंग के बाद। तो बॉर्डर पे हालात ख़राब है। इंडिया अब कोशिश करेगा कि भाई नेपाल से अपना बदला ले।